आज हम लोग क्या सीखेंगे? वॉइस का बारे में जानेंगे। वॉइस चेंज कैसे करेंगे उसको भी जानेंगे। वॉइस क्या है? वॉइस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब which shows whether the subject acts or is acted upon. In English have two voice. Active voice, passive voice. Active voice and passive voice. Active and passive voice. Active voice क्या है? When the subject of the sentence is the does or actor, the verb is active. Active voice क्या है? When the subject of the sentence is the does or actor, the verb is active. Passive voice क्या है? When the subject of the sentence is acted upon, the verb is passive. Passive voice क्या है? When the subject of the sentence is acted upon, the verb is passive. Next, rules of changing from active to passive voice. एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए रूल्स क्या क्या है जानते हैं? रूल्स क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस चेंज टू सब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस चेंज टू सब्जेक्ट. टू बी, हैव, विल, वर्ब. टू बी और हैव और विल वर्ब. Third form of the verb, subject of the sentence change to object which is preceded by. Subject of the sentence change to object which is preceded by. क्या बोल रहा है यहाँ पर रूल्स में? ऑब्जेक्ट जो है चेंज होके सब्जेक्ट बन जाएगा और टू बी नेने से हैव, नेने से विल, वर्ब का संग लगेगा जो कि हेल्पिंग वर्ब में होता है. नेक्स्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होएगा हमेशा जब हम लोग एक्टिव से पैसिव में करेंगे चेंज, तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होएगा. और हेल्पिंग वर्ब में इस तरह टू बी, हैव, विल, इस तरह हेल्पिंग वर्ब में भी रहेगा. नेक्स्ट, सब्जेक्ट चेंज होके ऑब्जेक्ट बन जाएगा जो कि बाय का बाद लिखना है. नेक्स्ट, फर्स्ट हम लोग जानेंगे assertive and interrogative sentence. assertive and interrogative sentence. assertive में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आता है जो हम लोग पहले ही सीखे हैं, और इंट्रोगेटिव तीनों एक ही संग सीखेंगे. इसमें डिटेल्स में सीखेंगे क्या क्या चीज़ में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. फर्स्ट हम लोग जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस. रूल्स क्या है? फर्स्ट, एक्टिव वॉइस पॉजिटिव. एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो एक्टिव पॉजिटिव को पहले जानेंगे. पॉजिटिव का रूल, एक्टिव वॉइस का रूल्स क्या है? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. पैसिव वॉइस पॉजिटिव्स का रूल्स क्या है?
ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस नेगेटिव, ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव, एम इज आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। एग्जाम्पल क्या है? एक्टिव वॉइस पॉजिटिव, बीज मेक हनी, बीज मेक हनी। पैसिव वॉइस में जब चेंज हो जाएगा पॉजिटिव से पॉजिटिव में, कैसे लिखेंगे रूल्स को फॉलो करके? हनी इज मेड बाय बीज, हनी इज मेड बाय बीज। पैसिव वॉइस नेगेटिव, जब सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में नेगेटिव में चेंज करेंगे तब रूल्स को फॉलो करके कैसे सेंटेंस आएगा? हनी इज नॉट मेड बाय बीज, हनी इज नॉट मेड बाय बीज। पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव, सेंटेंस में जब चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, इंट्रोगेटिव में जब चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? इज हनी मेड बाय बीज क्वेश्चन मार्क, इज हनी मेड बाय बीज क्वेश्चन मार्क। आप देखिए रूल्स को फॉलो करके ही सेंटेंस को चेंज किया गया है, आप भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हम लोग पहले ही रूल्स में देखे हैं, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट, और जब हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगा, और ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर सब्जेक्ट का जगह पर आ जाएगा, और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट का जगह पर आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पर सेंटेंस में देख सकते हैं, बी जो सब्जेक्ट है बीज, और हनी जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर सब्जेक्ट का जगह पर आ गया, और बीज जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट का यहाँ पर आ गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? एक्टिव वॉइस पॉजिटिव, सीता लव्स सावित्री। पैसिव वॉइस पॉजिटिव, सावित्री इज लव्ड बाय सीता। हम लोग पहले सेंटेंस में एक ही सेंटेंस एक ही एक्टिव वॉइस से पॉजिटिव वॉइस से एक्टिव वॉइस पॉजिटिव से पॉजिटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों सेंटेंस को सीखे देखे हैं कैसे चेंज करते हैं। यहाँ पर एक्टिव वॉइस पॉजिटिव से पॉजिटिव को चेंज करना और नेगेटिव से नेगेटिव को चेंज करना कैसे होता है वो दिखा रहे हैं। फर्स्ट वाला एक्टिव वॉइस क्या है? पॉजिटिव, सीता लव्स सावित्री। पैसिव वॉइस पॉजिटिव, सावित्री इज लव्ड बाय सीता। एक्टिव वॉइस नेगेटिव, he does not take coffee, he does not take coffee. Passive voice negative, coffee is not taken by him, coffee is not taken by him. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक्टिव वॉइस नेगेटिव, राम डज नॉट राइट हिज होमवर्क, राम डज नॉट राइट हिज होमवर्क। पैसिव वॉइस नेगेटिव, हिज होमवर्क इज नॉट रिटन बाय राम, हिज होमवर्क इज नॉट रिटन बाय राम। एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव, डू यू लाइक कॉफ़ी क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव, इज कॉफ़ी लाइक्ड बाय यू क्वेश्चन मार्क। एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव, डोज शी ईट स्वीट्स क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव, आर स्वीट्स ईटन बाय हर, आर स्वीट्स ईटन बाय हर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हम लोग कैसे देख रहे हैं? नेगेटिव से नेगेटिव को ही चेंज करना।
एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, नेगेटिव से नेगेटिव को ही चेंज करना, इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव को चेंज करना। लेकिन फर्स्ट एग्जाम हम लोग जो देखे पहले, जो एक ही सेंटेंस है पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव और पॉजिटिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीनों को ही चेंज करना देखें। तो इसमें भी हम लोग चेंज कर सकते हैं अपना से, इंट्रोगेटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में ही चेंज कर सकते हैं, तीनों में एक दूसरे का संग चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रूल्स क्या बोल रहा है यहाँ पर? रूल्स क्या है? एक्टिव वॉइस पॉजिटिव, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस नेगेटिव, ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव, एम इज आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क्स। एग्जाम्पल, एक्टिव वॉइस पॉजिटिव, ही इज राइटिंग ए लेटर, ही इज राइटिंग ए लेटर, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। एग्जाम्पल, एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में जब चेंज कर देंगे रूल्स का हिसाब से तो कैसे बन जाएगा सेंटेंस? ए लेटर इज बीइंग प्लेड बाय हिम, ए लेटर इज बीइंग प्लेड बाय हिम। पैसिव वॉइस नेगेटिव, ए लेटर इज नॉट बीइंग प्लेड बाय हिम, ए लेटर इज नॉट बीइंग प्लेड बाय हिम। पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव, is a letter being played by him question mark। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? एक्टिव वॉइस पॉजिटिव, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। पैसिव वॉइस पॉजिटिव, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये पॉजिटिव से पॉजिटिव को ही चेंज किया है, इसमें हम लोग नेगेटिव से नेगेटिव को चेंज करेंगे। एक्टिव वॉइस नेगेटिव, शी इज नॉट वॉचिंग टीवी। पैसिव वॉइस नेगेटिव, टीवी इज नॉट बीइंग वॉच्ड बाय हर, टीवी इज नॉट बीइंग वॉच्ड बाय हर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव, is he playing ludo question mark। passive voice interrogative, is ludo being played by him question marks, is ludo being played by him question marks। next example, active voice interrogative, are they singing a song question mark। passive voice interrogative, is a song being sung by them question mark, is a song being sung by them question mark। next, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रूल्स क्या है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए? एक्टिव वॉइस पॉजिटिव, सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़ प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस नेगेटिव, ऑब्जेक्ट प्लस have or has plus not been plus third form of the verb plus by plus subject। passive voice interrogative, have or has
plus object plus been plus third form of the verb plus by plus subject क्वेश्चन मार्क्स। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल में सेंटेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे सेंटेंस में देखिए। ही हैज़ ऑन ए प्राइज, पैसिव वॉइस पॉजिटिव, ए प्राइज हैज़ बीन won by him, a prize has been won by him। पैसिव वॉइस नेगेटिव, a prize has not been won by him, a prize has not been won by him। पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव, has a prize been won by him क्वेश्चन मार्क्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बोल रहा है यहाँ पर? एक्टिव वॉइस पॉजिटिव, दे हैव रिवाइज्ड देयर लेसन, दे हैव रिवाइज्ड देयर लेसन। पैसिव वॉइस पॉजिटिव, देयर लेसन हैज़ बीन रिवाइज्ड बाय देम, देयर लेसन हैज़ बीन रिवाइज्ड बाय देम। एक्टिव वॉइस नेगेटिव, he has not done his duty, he has not done his duty। पैसिव वॉइस नेगेटिव, his duty has not been done by him, his duty has not been done by him। एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? हैव यू सीन द ताज क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव, हैज़ द ताज बीन सीन बाय यू क्वेश्चन मार्क्स। एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव, हैज़ शी ईटन फूड क्वेश्चन मार्क्स। पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव, हैज़ फूड बीन ईटन बाय हर क्वेश्चन मार्क, हैज़ फूड बीन ईटन बाय हर क्वेश्चन मार्क्स। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दिस टेंस कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस, दिस टेंस कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। रूल्स क्या है? एक्टिव वॉइस पॉजिटिव, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट प्लस was or were plus third form of the verb plus by plus subject। पैसिव वॉइस नेगेटिव, ऑब्जेक्ट प्लस was were plus not plus third form of the verb plus by plus subject। पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव, was or were plus object प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क्स। एग्जाम्पल रूल्स के हिसाब से देखिए चेंज किया गया है। एक्टिव वॉइस पॉजिटिव, ही रोट ए लेटर, ही रोट ए लेटर। यहाँ पर एक्टिव वॉइस में सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसीलिए यहाँ पर रोट लिखा गया है। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ही रोट ए लेटर। पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तीनों में ही चेंज करके एक ही सेंटेंस को तीनों में ही चेंज करके देखेंगे। पैसिव वॉइस पॉजिटिव, ए लेटर वॉज रिटन बाय हिम। पैसिव वॉइस नेगेटिव, ए लेटर वॉज नॉट रिटन बाय हिम। पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव,
was a letter written by him? Question marks. Was a letter written by him? Question marks. नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? एक्टिव वॉइस पॉजिटिव. दे प्लेड फुटबॉल. पैसिव वॉइस पॉजिटिव. फुटबॉल वॉज प्लेड बाय देम. एक्टिव वॉइस नेगेटिव. वी डिड नॉट कंप्लीट आवर वर्क. पैसिव वॉइस नेगेटिव. आवर वर्क वॉज नॉट कंप्लीटेड बाय अस. आवर वर्क वॉज नॉट कंप्लीटेड by us. Active voice interrogative. Did she wrote a story? Question marks. Passive voice interrogative. Was a story written by her? Question marks. Active voice interrogative. Did Ram save a child? Question marks. Passive voice interrogative. Was a child saved by Ram? Question marks. Was a child saved by Ram? Question mark. Next, past continuous tense. past continuous tense में एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? रूल्स देखिए. एक्टिव वॉइस पॉजिटिव. सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. एक्टिव वॉइस में इसी तरह रहेगा. सब्जेक्ट वॉज वेयर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. पैसिव वॉइस पॉजिटिव. ऑब्जेक्ट प्लस was or were plus being plus third form of the verb plus by plus subject. Passive voice negative. Object plus was or were plus not being plus third form of the verb plus by plus subject. Passive voice interrogative. Was or were plus object plus being plus third form of the verb plus by plus subject. Question marks. Example. Active voice positive. Ram was making a letter. राम सब्जेक्ट है. was और were में से was है. making जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेक है और उसका संग आईएनजी. मेकिंग ए काइट. ए काइट ऑब्जेक्ट है. इसी को अभी पैसिव वॉइस पॉजिटिव नेगेटिव और इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे. पैसिव वॉइस पॉजिटिव. A kite was being made by Ram. A kite was being made by Ram. Passive voice negative. A kite was not being made by Ram. Passive voice interrogative. Was a kite being made by Ram? Question marks. Next example क्या बोल रहा है? Active voice positive. She was playing carom. Passive voice positive. Carom was being played by her. Active voice negative. They were not doing their duty. Passive voice negative. Their duty were not being done by them. Active voice interrogative. Was she cooking food? Question marks. Passive voice interrogative. Was food being cooked by her? Question marks. Was food being cooked by her? Question marks. Active voice interrogative. Were they singing a song? Question marks. Passive voice interrogative. Was a song being sung by them? Question marks. Next, past perfect tense. Past perfect tense का रूल्स क्या है? एक्टिव वॉइस पॉजिटिव. सब्जेक्ट प्लस हैड
plus third form of the verb plus object. Passive voice positive, object plus had plus been plus third form of the verb plus by plus subject. Passive voice negative, object plus had plus not been plus third form of the verb plus by plus subject. Passive voice interrogative, had plus object plus been plus third form of the verb plus by plus subject question marks. Example, active voice positive, we had already seen this film. We had already seen this film. Passive voice positive, this film had already been seen by us. Passive voice negative, this film had already not been seen by us. Passive voice interrogative, had this film already been seen by us? Question marks. Next एग्जाम्पल क्या है? एक्टिव वॉइस पॉजिटिव, आवर टीम हैड वॉन द मैच. पैसिव वॉइस पॉजिटिव, द मैच हैड बीन वॉन बाय आवर टीम. नेक्स्ट एग्जाम्पल नेगेटिव में है, देखिए. एक्टिव वॉइस नेगेटिव, शी हैड नॉट किल्ड ए स्नेक. पैसिव वॉइस नेगेटिव, a snake had not been killed by her. Active voice interrogative, had she visited London before? Question marks. Passive voice interrogative, had London been visited by her before? Question marks. Had London been visited by her before? Question marks. Active voice interrogative, had he done his duty? Question marks. Had he done his duty? Question marks. Passive voice interrogative, had his duty been done by him? Question marks. Had his duty been done by him? Question marks. Next, past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense, this tense cannot be changed into passive voice. Past perfect continuous tense जो कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता है. नेक्स्ट क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस. रूल्स क्या है? एक्टिव वॉइस पॉजिटिव, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. पैसिव वॉइस पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. पैसिव वॉइस नेगेटिव, ऑब्जेक्ट प्लस shall or will plus not be plus third form of the verb plus by plus subject. Passive voice interrogative, shall or will plus object plus be plus third form of the verb plus by plus subject question marks. Example क्या है? Active voice positives, I shall play football. Passive voice positive, football will be played by me. Football will be played by me. Passive voice negative, football will not be played by me. Passive voice interrogative, will football be played by me? Question marks. Will football be played by me? Question marks. Next एग्जाम्पल क्या है? एक्टिव वॉइस पॉजिटिव, दे विल लाइक एप्पल्स. दे विल लाइक एप्पल्स. पैसिव वॉइस पॉजिटिव, एप्पल्स विल बी लाइक्ड बाय देम.
apples will be liked by them. Next example, active voice negative. You will not spend money. Passive voice negative. Money will not be spent by you. Active voice interrogative. Will Sheila finish the work? Question marks. Passive voice interrogative. Will the work be finished by Sheila? Question marks. Will the work be finished by Sheila? Question marks. Active voice interrogative. Shall you open the door? Question marks. Shall you open the door? Question marks. Passive voice interrogative. Will the door be opened by you? Question mark. Will the door be opened by you? Question mark. Next, future continuous tense. Future continuous tense. This tense cannot be changed into passive voice. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता है. नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस रूल्स क्या है? एक्टिव वॉइस पॉजिटिव, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. एक्टिव वॉइस पॉजिटिव का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. पैसिव वॉइस पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. पैसिव वॉइस नेगेटिव, ऑब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नॉट हैव बीन plus third form of the verb plus by plus subject. Passive voice interrogative, shall or will plus object plus have been plus third form of the verb plus by plus subject question marks. Example क्या है? Active voice positive, he will have painted the picture. He will have painted the picture. Passive voice positive, the picture will have been painted by him. The picture will have been painted by him. Passive voice negative, the picture will not have been painted by him. The picture will not have been painted by him. Passive voice interrogative sentence क्या है? Will the picture have been painted by him? Question marks. Will the picture have been painted by him? Question marks. यहाँ पर देखिए सारा रूल्स का हिसाब से दिया गया है. सारा एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करें, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में, तीनों ही सेंटेंस में चेंज किया गया है. नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? एक्टिव वॉइस नेगेटिव, ही विल नॉट हैव डन हिज होमवर्क. ही विल नॉट हैव डन हिज होमवर्क. पैसिव वॉइस नेगेटिव, his homework will not have been done by him. His homework will not have been done by him. यहाँ पर एक्टिव वॉइस नेगेटिव से पैसिव वॉइस नेगेटिव में चेंज किया गया है. नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव, विल दे हैव taken the food? Question marks. Will they have taken the food? Question marks.
पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव, विल द फूड हैव बीन टेकन बाय हिम क्वेश्चन मार्क्स, विल द फूड हैव बीन टेकन बाय देम क्वेश्चन मार्क। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करें, जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही चेंज किया गया है। यहाँ पर आप इंट्रोगेटिव से नेगेटिव में भी चेंज कर सकते हैं, फॉर्मूला को यूज़ करके, रूल्स को यूज़ करके। एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव, विल दे हैव टेकन द फूड क्वेश्चन मार्क्स। पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव, will the food have been taken by them question marks। next, future perfect continuous tense, future perfect continuous tense, this tense cannot be changed into passive voice, this tense cannot be changed into passive voice। future perfect continuous tense भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता है। थैंक यू।